Okay, are you right? Are you seeing? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so are you? How are you feeling right now? Sir, I'm feeling nervous. I'm Yes, sir. So are you ready for your mock interview? Yes, sir. Sure, sir. So can we start? Yes, sir. Okay, if you're not feeling good, then you can take your time. So we will start later on. But if you're feeling good, then we can start. No, sir. No, sir. It's fine. It's fine, sir. This Okay, okay. nervousness So is natural, sir. okay, Mhm. are you just introduce yourself so we can talk further? Yes, sir. Sir, I'm Ayu Singh, belonging to Bareilly, UP. I did my schooling from Bareilly and I did my graduation BSc on Zoology Honors from Department of Zoology, Institute of Science, Banaras Hindu University. Then I did my post graduation in MSc Zoology, Institute of Science, Banaras Hindu University. Then I have completed one project in wildlife forensic in from Center of Cellular and Molecular Biology, CCMB, Hyderabad. And meanwhile, I have cleared CSIR NET GRF and GATE twice with rank AIR 245 and 65, and two times TIFR and one time IIT JAM also. Then I have enrolled myself in PhD program in Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University. Currently, I'm working on type 2 diabetes. So currently you are a research scholar in BHU itself. Yes, sir. Okay, very good. So your topic, what is your topic of PhD? Sir, my topic of PhD is effect of daily consumable doses of Indian kitchen spices on HFD, high fat diet, and streptozotocin induced diabetes, type 2 diabetic rats. Okay, are you? If I asked you, what is your favorite topic or favorite domain? Sir, I would say immunology and biochemistry. Biochemistry and immunology. Yes, Okay, sir. so may I ask some questions regarding these two topics? Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Biochemistry and immunology. Yes, sir. Are you ready for that? Yes, sir. Okay, are you? Tell me simple thing. Yes, sir. Carbohydrate, Yes, which sir. is one of the major source of energy in our body, right? Yes, sir. Uh, there is another molecule that is lipid also. Which molecules will act as a good substrate for the respiratory reactions? That is, uh, yeah, cellular respiration. Hmm. Sir, if we'll see the respiratory quotient, the body will use first carbohydrate, and if the carbohydrates is not in adequate amount, then lipid will be used, and at the last, protein will be used. Protein at the last. Okay, so Yes, among these three molecules, that is carbohydrate, protein, and lipid, uh, yes, sir. our body prefer carbohydrate for the energy productions, right? Yes, sir. So, as we know, there is a data that is one molecule of a glucose and one molecule of a lipid, right? There is a 1 is to 5 ratio in the terms of a ATP. That means lipid can produces 5 times more ATP as compared to the glucose, right? So if we have Yes, sir. lipid in our body, in our cells, then why our cells wants to prefer glucose rather than lipid for the respiratory process? Yes, sir. Sir, the carbohydrate has basically the sugar, glucose, especially. The glucose will go into the glycolysis, and then pyruvate will go into the Krebs cycle. But when we go for lipid will convert it into fatty acid, will convert it into first in the cycle of it will has to go in the Krebs cycle. I'm so sorry, sir. Sir, electricity is not. Uh, Okay, no issue. You can continue with your voice. yes, sir. So and so I think cell will prefer glucose because uh, cell will prefer glucose. Sir, I'm not sure, but I am.
I'm just saying that lipid need more water to dissolve to break down for the breakdown also. So I guess this is the reason, and Okay, lipid means also has to okay, okay, change in okay. the Means body. got it. Means you want to say that there will be more water required for the uh, digestion of lipid molecules as Digestion of compared to the lipid. carbohydrate. That is why our cells prefer carbohydrate for the energy productions as compared to the lipid. Okay. Lipid. Hmm. Sir, when body will go for the hibernation, the body will use lipid. Like after some time, glucose and glycogen will not be there. Then body will use lipid, and that detoxification, like the beta oxidation of lipid, will provide water also for the body, so that in hibernation animal can survive. So this is also the thing I think. Okay, are you as you are working on a project that is the PhD that is regarding diabetes. So Yes, sir. diabetes mellitus and diabetes insipidus. Yes, sir. What is the differences between them? Okay, sir. So, sir, diabetes mellitus is the main cause of diabetes mellitus is the uh, relative and relative deficiency and complete deficiency of insulin, while the diabetes insipidus is because of the imbalance of a hormone which is called uh, dihydroxy DTH. Uh, sir, DTH hormone released from the Sorry, can you uh, repeat the name of the hormones which is involved in the diabetes insipidus? sir, diuretic hormone, which is released from the hypothalamic region, from the anterior posterior pituitary region. Uh, yes, sir, posterior pituitary region, diuretic hormone. So this hormone got imbalance. After that, diabetes insipidus happened, and the main symptom of diabetes insipidus is diuresis is there, like uh, 2 times of urine will be passed from the body. Okay, diabetes mellitus has two types. Yes, sir. What is this? Type 1 and type What 2. is the Type 1 and type 2. So what? type 1 has sir type 1 has the complete okay. So sir type 1 has the insulin deficiency because the beta cells destruction were there due to the autoimmune auto deficiency of immune tolerance. So our cytotoxic T cell thing, these beta cells are different non-self cells, and they will kill them. Then type 1 diabetes mellitus will happen, and due to no cell present or no cell active no beta cell active in the pancreas. That's why the insulin will not be present in the blood, and that's why glucose level is high in blood, which is called the hyperglycemia condition. In type 2 diabetes, there is also deficiency of insulin sometimes, and there is one another case which is called insulin resistance. Insulin resistance means the receptor of insulin is not working properly. That means insulin is there in the blood stream, but it is not able to bind the receptor, or it is able to bind the receptor, but it is not able to activate the downstream signaling, so that and all the downstream reactions which should happen after the insulin binding, these are not going to happen, and glycolysis will not happen. Glyconeogenesis will happen because in cell thing there is a deficiency of insulin. So yes, sir, this is the major difference. One difference is there. The type 1 diabetes mellitus is insulin dependent diabetes mellitus, while type 2 is non insulin dependent or insulin independent diabetes mellitus. That means if we will give insulin supplement or insulin injection from outside, type 2 diabetes mellitus can like there is no major effect because already insulin is present in the bloodstream, but it is not able to uh, work as a signaling molecule properly. Okay, got it. Ayu, is there the role of a calcium ion in activation of a glucose receptor, that is GLUT receptors,
for the active absorptions of glucose molecules. Is there any role of a calcium ion? So there are some calcium gated channels. So, yes, sir. Sir, calcium. When the calcium gated channel, calcium is needed for the for the opening of calcium gated channel. So, sir, transporters are need for the calcium for the opening and closing of these transporters. Okay. Uh, are the glut receptors are always present on the surface, or there are some conditions or conditional based expressions of happens? Sir, red receptor, as far as I remember, uh, Uh, sir, I can't recollect right now. I have read about this, but I can't recollect right now. Okay. Regarding to the plasma membrane, which is one of the major part of the cells, without Yes, membrane, any cells cannot survive. All the cells have a ability to maintain their integrity of the plasma membrane, right? So, yes, sir. how a cells maintain the integrity of plasma membranes, and which molecules play important role in maintaining of that integrity? That is the fluidity of the membrane. Yes, sir. Sir, plasma membrane is made up of two things: hydrophobic tail and hydrophilic head. And as far as I remember, the lipid molecules and protein molecules, the lipid molecule behave like a sea, and protein molecules are behave like a floating ship. So, to maintain the integrity of lipid content, there are some enzymes called the flopase, scramblage. So flippase is maintaining the lipid moiety. If To move the lipid from outside to inside, by flopase vice versa, and scramblage to maintain the lipid moiety. Uh, like in any direction. Direction is not mandatory for scramblage. So wherever the concentration gradient needed, it will behave like that. That scramblage. And sir, lipid raft domains are there for the some activities of cell. And sir, proteins, the transmembrane proteins, intrinsic and extrinsic proteins are also there for the signaling path for the processing of signaling pathways in the cells. Yes, sir. Okay. Yes, GPCR. sir. Have you heard about the GPCR? Yes, sir. What is this? GPCR, yes. G coupled receptors, uh, receptor molecules. Yes, sir. Okay. What is the role of GPCR? Sir, sir, GPCR is mainly uh, is the signaling process for is the receptors for the it's a transmembrane receptor which crosses the cell membrane 7 times, serpentine behavior. So mm, it will receive the signal, and then it will pass the signal through the GTPase activity, and then guanine exchange factor will activate, and the subunit of alpha beta. Alpha is break. Sir, alpha subunit will break, and then beta and gamma subunit will dissociate from the alpha, and then the activation of GPCR will happen. Uh, this will go for the PKC activation either, or PKA activation. So cascade reactions will happen after the activation of GPCR, after getting the signals. Okay, phospholipase is one of the major enzyme involved in the cell signaling. Have you heard about this? Yes, sir. What is this? What is Phospholipase. phospholipase? Sir, phospholipase C, I can remember. Phospholipase C is the enzyme which will cleaves the PIP3 into PIP2 and sir, I don't remember the one compound name. Uh, so
Yes, sir. So then IP3 will go to the ER, endoplasmic reticulum, and it will help in endoplasmic reticulum to release the calcium ion, and calcium ion will go to the again towards the membrane, and it will act like a signaling molecule or a secondary messenger. Calcium ion can act as a secondary messenger. Okay, Ayush, suppose a person is suffering from low level of ATP, low level of energy. At Yes, that sir. time, which cell organelles will more active as compared to the other one? Yes, sir. Mm, sir, organ, I guess liver, because Cell organelles, glycolysis. not organ, cell organelles. Okay, organelles. Yeah. Okay, cell organelle. Mitochondria, definitely, because mitochondria is called as a powerhouse of cell. So, in cytoplasm, glycolysis will happen, and as the glycolysis will complete, the pyruvate will move towards will convert into the acetyl coenzyme, and acetyl coenzyme A will go to the mitochondria for the Krebs cycle. So, Krebs cycle and ETC will happen again and again. So, mitochondria definitely the organelle in the cell which actively work. Okay, the inner mitochondrial membrane has a something like a finger-like projection, something like folding. Yes, Why sir. it is not a regular circle kind of a structures? Why it is in a folding pattern? Is there any significance of that folding? So to increase the area, because there are a lot of ATPase pump in the inner membrane of mitochondria. So to increase the surface area, I guess this finger-like projections are present. Okay, in F1, in mitochondria, that is Yes, sir. finger-like projections contain two parts, that is F1 and F naught. What is Yes, sir. F naught? Sir, F naught is the portion of this channel which is present inside the membrane. मतलब What is what is in the what is translucent what side. is not? What is O stand there? FO. Okay, O stands there. Sir, I have not I have no idea about this, but I guess O. Sir, I'm not able to guess even. Have you heard about the oligomycin? Oligomycin. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is O. F naught means F0 is oligomycin sensitive. The part of Because oligomycin can block the. exactly Yes, F sir. naught part is the oligomycin sensitive region. So that is why it known as the F naught or F1. Yes, sir. Okay, So moving now on. I got. Yeah, moving on. Uh, Suppose you have a cell Yes, sir. and inside the cells the molarity is 6 molar NaCl, right? And the cells you kept in a solution, and that solution has 8 molar NaCl solutions. What will happen to that cell? Okay, sir. As the concentration of NaCl is higher in the outside, that means the concentration of water is low outside. So cell will lose water uh, for the in the surroundings. So cell will get shrink. Okay, and if I ask to you, that is the nature of that solutions will called. So sorry, sir. Nature of the osmosis. No, no, nature of a solution, outer side Nature of solution solution. in reference to the cell. That is Extracellular matrix. no, no, no. That is hypertonic, hypotonic, or isotonic. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sir, the cell has the hypotonic solution while the surrounding has 8 molar, which is greater concentration, the hypertonic solution. Okay, active Yes, sir. transport, right? This is one of the Yes, major concept about the transporting of a material. There yes, are sir. two types of active transport. That is primary active transport and secondary active transport. Can Yes, you sir. Yes, sir. elaborate this with example? Uh, yes, sir. Sir, some primary active transport is the transporter needs the main transporter which transport the molecule from one side to another side. It needs ATP directly, while the secondary transport means the
it is depend on the uh, other molecule which is coming from the other channels. So for primary transporter is I guess this F not F1 channel, and secondary there is a glucose transporter. So these are the dependency on the sodium channel. So sodium channel, when sodium channel will these are not ATP dependent. So when the concentration of sodium, according to the concentration gradient, sodium will come. Then these sodium के concentration के dependency है glucose transporter के ऊपर, and this will use ATP as energy. So this is called secondary transport, secondary active transport. Okay. Uh, I you suppose you are dealing with a cell, Yes, sir. and suppose you have a liver cells, right? Yes, sir. And basically you want to examine the consumption of a glucose molecules by that liver cells. How you will perform an experiment to determine the utilization of a glucose molecules by that cells? Can you just map and figure out that experiment or any process? Suppose a cells is utilizing the outside glucose molecules. Yes, It sir. can be just elaborate by experiment or layout by the designing. Yes, sir. Sir, we can tag that glucose from the pa- fluorescence tag dye, and then we can localize where this glucose molecule will go, or just change the one carbon atom with the radioactive isotope, and then we can track where this molecule is going. So if it is going inside the cell, we can track out. Yes, sir. Okay, means by using radio labeling or by using some Fluorescence dye. fluorescent dye tagging, right? There will be the Yes, sir. method to Yes, examine yes, the. yes, Okay, yes. well done, well done. Uh, okay, so moving towards the immunology, as you stated that you are also comfortable in immunology. So may I Yes, ask some questions regarding immunology? yes, sir. Yes, sir. Ask. Okay, in immunology, antibody has a very crucial role, right? Yes, sir. And as we all know, that is antibody has ability to eliminate out the effect of a antigen molecule or to neutralize the role of a antigen molecule, right? Yes, My sir. question is that how any antibody can eliminate or can neutralize or can nullify the impact of a antigen molecule? What are the molecular basis mechanism behind it? Okay, sir. Sir, antigen and antibody, there is an interaction between the antigen and antibody, the epitope and paratop interaction. So, after making the complex antigen antibody complex, that the first and primary thing uh, from which antibody can neutralize the antigen effect. The second thing is antibody and antibody dependent cellular cytotoxicity. Cytotoxicity, yes, ADCC. So, what happened when any foreign particle or any foreign microorganism will come into the body? So, antibodies are going to uh, like bind with bind with those pathogens, and so that uh, opsonization can happen. Complement protein will come and make the uh, complement fixation will be there. And yes, sir, these are the things. One thing is, if the antigen encounters from the macrophages, so macrophages engulf because of these engulfing property of macrophage engulf the pathogen, and it will degrade or fragmentation of that pathogen, and it will present one piece or one fragment of that, and of that pathogen as an antigen. So this is called the antigen presentation of antigen presenting cell presenting the antigen, right? So after this presentation, T cell will get the co-stimulatory signals with each other, macrophage and T cell, and then the whole immune system can activate and
there are natural killer cells which can activate. There are many B cell which will convert it into the effector plasma B cells, and there are other T knife cells which can convert it into the cytotoxic T cell, other cytotoxic T cell. So whole immune system will react after this. So antigen, and then B cell will secrete the antibody. Now antibody again the bind with the antigen. So these are the main things which antibody can Okay, neutralize the got antigen it. effect. Spectroscopy, one of the most important techniques used in the biochemistry. We can say that without spectroscopy, biochemistry do not have any relative information. So, Yes. what is spectroscopy? Sir, spectroscopy is the technique through which we can tell especially we can determine the concentration of a particular solution, and we can tell the what kind of macromolecules and micromolecules are there in the solution. So let's say the absorb in there is in spectrophotometry, there is an absorbance of when light passing through the solution. So if the absorbance at 280 nanometer, we can tell there is the protein which is rich in aromatic amino acids. Uh, Given this kind of okay, got it, information got we it. can get. Are you Is it Yes, sir. possible that two molecules have a same absorptions band or same absorption wavelength? Two different molecules. Suppose we have a two molecule that is A and B, and we are dealing with a spectrophotometer that is UV visible spectrophotometer. Is it possible that these two different molecules will absorb same frequency of light or same wavelength of light? Sir, as far as I remember, I I didn't study any two molecules which got same absorbance, but sir, it is possible if the two molecules are closely related, and two molecules are very similar, have kind of complexity, and similar kind of bonds are there, similar kind of molecule atoms are there. So it is possible, sir. If they have a same similar kind of atom, then how they will differ? Then will be considered as a single molecule. Yes, sir, but with little differences. Okay, so Little my difference. so my question is that why each and every different kinds of element have their own specific absorptions band or wavelength? Yes, sir. Sir, because sir, the molecules made up with the atoms, and atoms have the two atoms have the bonds with each other. So, these bonds, maybe single bond, maybe double bond. I am Um, not uh, talking about the molecules and bond is needed in the molecules. Just I am talking about yes, the elements. Each and every element have their own specific spectra and their own specific absorptions band. That means each and every elements will absorb a specific wavelength of light. No two elements can absorb same frequency or same wavelength of light. So why? okay, element, because they have uh, the atomic number is different of each element, and atomic number is different. That means the number of electron and proton in the atom is different if different elements are there. So the I'm not studied this, but I'm just trying to answer this question on the basis of chemistry knowledge. Then the light passes through the element. Uh, it has to pass through the nucleus of the atom, which has the proton and neutron and electron. So I guess this is the reason, because each and every atom has the different atomic number, and different electrons are there. Okay, leave it. Are you Have you heard about Yes, the sir. NMR, nuclear magnetic resonance? Yes, sir. I have heard about this, but yes, sir. Okay, I'm in biochemistry, there is a technique to determine the motion or movement or just mobility of lipid molecules in a plasma membrane. Can you name that techniques and the working principle of that technique?
Suppose to detect. yeah, suppose you want to examine the motion or mobility of lipid molecules of the membrane, so which technique would you use? Sir, PrEP is, I guess, the name of the technique, the fluorescent recovery after photobleaching. Okay. So, yes, sir. So, the basic principle of that technique is after the photobleaching, first the bleaching of the molecules with the help of light, and then the detection of these molecules, motion of these molecules by a help of fluorescence. So we can see where is the motion and which kind of motion is there in the Okay, Ayu, what is 2D electrophoresis? 2D electrophoresis. Yeah. Uh, Sir, 2D electrophoresis, that like electrophoresis, which DNA electrophoresis and protein electrophoresis. I guess. I'm 2D Okay, is electrophoresis. there any concept of a 1D electrophoresis? 1D? Why it is known as the Um, 2D electrophoresis? I'm just thinking about this only. I'm I'm not able to recollect right now. Techniques. Yeah, I have to revise this. Okay, okay, no issue. What is isoelectric point? Isoelectric point. Okay. Um, at which that sir, is that related to the amino acid deuterion Yeah. by any chance? Okay. So at isoelectric point, an amino acid cannot behave like it has no charge, no positive charge, no negative charge, while having the CO minus and NH3 plus. So at different pH, every amino acid will behave different. Like if pH is very low, then H ion concentration is very much high in the in the surrounding. Then this COO minus will uh, gain or will accept the H plus, and that particular amino acid will behave as positive charge positively. But the vice versa, pH will increase, and pH will increase, and then NH3 will lose the proton, and then it will behave like a negative charge. So at which point where amino acid will behave like neutral, no positive charge, no negative charge. So that's Okay. the And what will happen if the pH value is greater than pi value for that particular kind of protein? What will be the overall charges? sir, overall charges will be pH is greater than pi. greater than pi. Sir, negative. Negative. How? Sir, when pH will increase, that means, let's say pi for amino acid tyrosine or amino acid histidine, pi is, let's say, 6. I'm just taking example. Okay. So if it is increased, so let's say pH is 10, that means the H ion concentration of in the surrounding or in the solution is too much. Then this proton will, the NH3 will lose Just a minute. If you increase the pH value up to the 10, proton concentration less will be there. yeah, proton Less concentration will proton be less there. concentration Then, will yeah, be now there. you can proceed. Then NH3 plus will lose H plus to compensate this thing, and then CO minus is already there. That's why it will behave like a minus negative charge. Okay, Negative. means if a protein have a pH more than pi value, then overall charge will be negative on that protein. And if I Negative. reverse these questions, pH is Net positive. yeah, net positive, and pH हाँ. is equal to the pi, then Then jitter ion के that is जैसे behave no charges, it means will behave like a neutral charges. neutral charge. Okay, suppose you have a peptide, means polypeptide,
Yes, sir. having 36 number of amino acids. Okay, and Yes, the sir. nature of peptide is circular. Okay. So how many number of peptide bonds are there in a peptide? 36. 36. And Yes, sir. how many number of water molecule will losses there? 36. 36. And if I repeat these questions for the straight chain, Premium. 35. 35. 35 water molecule will lose and 35 peptide bond will be there. Okay, peptide bond is one of the major chemical bonds present in the proteins. Can you elaborate the properties of that peptide bond? What is the properties and how it is unique bond? Sir, yes, sir, I can elaborate. Sir, there is a alpha carbon. So, alpha carbon and the other side carbon is they share the bond, psi bond, and the alpha carbon and nitrogen, adjacent nitrogen, will share the pi bond. So these uh, these three elements will share the psi bond and pi bond, and this kind of bond, when peptide bond will make, the hydrogen at water molecule will release, water molecule loss hoga. So this bond will made or will uh, this bond will make after the nucleophilic addition, nucleophilic elimination of water. Okay, peptide bond is single or double bond? Sir, it has the property of both single and like it has the length less than single and more than double bond, because it has the uh, delocalization of electron will be there. So Okay, that means partial double bond we can say. okay. If I ask why it has a partial double bond character, So delocalization of electron, because C double bond O is there adjacent. So electron will move from there. electron, Partial double bond. electron, right? Yes, sir. From which Yes, element? sir. From which element? CO, from CO to this peptide bond. So adjacent CO bond will be there, right? CO. That Because means there are two elements. That is the carbon and oxygen. yes, sir. So among these two elements, which element will rotate their electrons Okay, for? sir. Okay, okay. C double bond O. So this has the double bond character. C and C has the single bond character, which is the psi bond. Then between these three molecules, the localization of electron will happen, and then that's why C psi bond has the partial double bond character, as far as I remember. So if I ask what is the source of that electrons which delocalize in this phenomena, then what will be the answer? What is the source of that electron? Source source of that electron must be oxygen, has the electron pair, extra pair of electron, That is lone pair of electron. lone pair of electron. Yes, Okay. Uh, we have a certain structures in the secondary protein structures like as alpha and beta plate sheets, yes, sir. right? So for the formation of a secondary structures, which chemical bonds play important role, and which chemical bonds has major contributions for the formation of a secondary structure? Sir, hydrogen bond for the Hydrogen. making of beta sheets. Yes, sir. Hydrogen bonds will be there for the making of beta sheets. There are the parallel and anti-parallel beta sheets are there. And for the alpha helix, there are also hydrogen bonds will be there. Okay. And yes, Yeah, yeah. You can continue. and sir, for the fully functional tertiary protein, there are many bonds are there, like van der Waal interactions, hydrogen bond, ionic interactions are there, and yes, sir, some sulfide bonds are there for the quaternary structure. Disulfide bonds are there for maintaining the quaternary Okay. structure. Are you currently you are you are a PhD scholars in the BHU? Who is the vice chancellor of BHU currently?
सर वीके जैन सर। वीके जैन, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड? Background, sir, I don't know. Maybe he's from Allahabad University, I guess. I don't remember. I've read. Have you ever interacted with that VC, that is vice chancellor? No, sir. No, sir. Never. Achha, okay. Through mail only. Huh. Okay, okay. Okay, Ayush, thank you. Thank you for your nice interactions and sessions about your mock interview. So now it's over. If you have any query, any questions, any doubt, any confusions regarding your mock interview and regarding your interview, then now the session is open for you and you can ask your questions and now you can feel comfortable and now we can talk in Hindi also. Okay, so yeah. Yes, sir. Okay, sir. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले मुझे आप ये बताइए कि इंटरव्यू देकर के अभी कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे अच्छा लग रहा है और सर मुझे मुझे लग रहा है मुझे जो भी आता है मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। मुझे 40 मिनट समझ का नहीं इंटरव्यू आता। दिया आपने, आपको मालूम है? क्या सर? 40 मिनट्स का इंटरव्यू चला आपका। 40 मिनट्स या पता नहीं चला। ओके। और हार्डली आपको मेन इंटरव्यू में 15 to 20 मिनट्स का टाइम स्लॉट दिया जाएगा और उतने में ही आपको सारी चीज़ें जो भी वो पूछेंगे दो चार छः क्वेश्चन बता के चले जाएंगे। सो कहना बस सिर्फ ये चाहता हूँ कि जितना टफ और हार्ड इंटरव्यू यहाँ पे हुआ आपका, इससे कम ही टफ आपका इंटरव्यू वहाँ पे रियल में होगा और इतना ज़्यादा टाइम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा इंटरव्यूअर्स को। आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपको वो रफा दफा कर देंगे कि ठीक है बेटा आप जाइए, आपका आपका काम हो चुका है। ओके, तो अभी आप बता रही थी कि आपको अभी कैसा लग रहा है? आप स्टार्टिंग मतलब आपने जब नहीं दिया था तब और अभी आप देके फ्री हुई तब, क्या दोनों में कुछ डिफरेंसेस है आपके कॉन्फिडेंस में और आपके माइंड के स्टेटस में? सर हाँ, डिफरेंस तो है माइंड के स्टेटस में। मैं बहुत नर्वस हो रही थी और अभी दे दिया तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि हो गया। अभी स्टेबल हो बट गई? रियल तो हाँ, रियल तो अभी बचा है सर। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी भी आपने बहुत सारी चीजें पूछी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पढ़ी थी मैंने, पढ़ा है ये सब जो आपने अभी पूछा ना, ये 7 to 8 डेज पहले 1 तारीख को पढ़ा था। हम्म। अभी इतनी छोटे इंटरवल में, टाइम इंटरवल में मैं सभी भूल गई, सब कुछ भूल गई। ऐसे लगता है हर रोज रिवाइज करना पड़ेगा हर चीज, पर वो पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस है, हर चीज तो रिवाइज नहीं कर सकते डेली, और रिकलेक्ट नहीं कर पाती हूँ चीजों को। अभी वो 2 दिन में तो संभव नहीं है, आई नो। लेकिन क्या क्या कैसे इम्प्रूव करूं? ये मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं रिकलेक्ट भी नहीं आयु, कर पा रही आपने हूँ चीजें। आपने जेआरएफ कब क्वालिफाई किया? 2017। 17। ओके। और और आपकी एमटेक कब की है? एमटेक नहीं है सर, एमएससी 2018 पास में हूँ। अच्छा। 18 में पास हुआ। ओके। और 17-18 के बाद से उसके बाद से आप क्या कर रही हैं? पीएचडी में इन्वॉल्व हैं? सर मैंने प्रोजेक्ट किया सीसीएमबी से, हैदराबाद से, तो आई वाज इन्वॉल्व इन वाइल्ड लाइफ टू मच। और वाइल्ड लाइफ से काम करते वक्त मैं जूलॉजी नहीं पढ़ती थी बिल्कुल भी। यहाँ आई तो यहाँ पे भी अपना डायबिटीज पे काम कर रही हूँ। उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो पढ़ाई तो नहीं तो होती। आपने आंसर खुद ही दे दिया कि 2017 और 18 से आपका एकेडमिक टच खत्म है और राइट टच नाउ यू खत्म आर इन है। 2024, मतलब नियरली 7 से 8 साल का गैप हो चुका है। यस। और यस आप ये सर। उम्मीद करती हैं कि इन 7-8 सालों में जो आपने गैप दिया है अपने एकेडमिक चीज़ों को, उसके बावजूद भी आपका दिमाग सारी चीज़ों को याद रखे, ये तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी आपसे। है ना? देखिए ये जो इशू है सर आपको कैसा लगा कि मैंने कितना परसेंट बता पाया? 10%, 20%, कितना मैं बता बिल्कुल पाई? अभी उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ये जो प्रॉब्लम है आपके साथ में या किसी के भी साथ में कि जो चीज़ें इंस्टेंटली रिकॉल नहीं हो पाती हैं, उसके पीछे का कारण ये होता है कि वो सारी चीज़ें आपके माइंड में रूटीन बेसिस पे नहीं है। ठीक है? ओकेजनली आपने उसको पढ़ा है और जब ज़रूरत उसकी थी आपने पढ़ लिया और ज़रूरत खत्म है तो आपने उसको छोड़ दिया। वो आपके मतलब ऐसे लगता है कि कहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं तो आपने उसको सुना था, कहीं तो आपने उसको देखा है, लेकिन अंडर प्रेशर और एट दैट टाइम आप उसको तुरंत कैच अप नहीं कर पाते हो, रिकॉल नहीं कर पाते हो। ये यस चीज़ें सर। तभी हो पाएँगी जब आप उसके टच में रहेंगे। जैसे सपोज़ अगर आप कहीं टीचिंग कर रही होती, कहीं आप पढ़ा रही होती, चाहे सीएसआईआर वालों को, चाहे एमएससी के स्टूडेंट को, चाहे यूजी, पीजी किसी को भी पढ़ा रही होती, तो आप क्या होती हैं, आप इन्वॉल्व होती हैं। डेली बेसिस पे आप लेक्चर लेती, पढ़ाती, पढ़ती, कॉपी चेक करती, टेस्ट लेती, टेस्ट पेपर चेक करती।
ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, आपको उसके रिलेटेड में जो टर्म्स होते हैं, वो सब उसका वोकाबुलरी आपको तैयार हो जाता है। और हाँ सर। और आप उन सारे टर्मिनोलॉजी को ना, आप ना चाहते हुए भी, आपने नहीं भी पढ़ा है, फिर भी आपके दिमाग में वो चीज़ें क्या होती हैं, इम्प्रिंट हो जाती हैं। और ऐसे हम्म। टाइम पे जब आपसे कोई सवाल करता है, तो आपके माइंड में जो चीज़ें इम्प्रिंट हुई रहती हैं, वो तुरंत क्या होती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, और आप उसको आंसर्स कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चूंकि आपने 17-18 में अपनी मास्टर्स की, उसके बाद CSIR आपने मेहनत लगा के पढ़ाई किया होगा, और आपने JRF निकाल लिया, और PhD में आप इन्वॉल्व हो गई, राइट? तो PhD में तो उम्मीद नहीं कर सकता कि आप अपने मास्टर्स के सिलेबस को पढ़ रही होंगी, कि PhD अपने आप में इतना हैवी काम है कि आप उसी से फुर्सत नहीं पाती होंगी, राइट? और अगर मिल सर भी स्टेट पीएससी के लिए और पढ़ती अगर हूँ, पर और वो अगर और अगर थोड़े मिल भी टाइम जाता के होगा, लिए। तो एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती होगी कि फिर दोबारा कुछ किताब देखने का मन करता नहीं होगा। और हम्म। अंदर से मन में फिर ये भी सवाल आ रहा होगा, हो गया कि क्यों देखें, अब तो इसका कोई काम बचा नहीं, ज़्यादा तो निकल ही गया है, क्या ही करना है इसका, हम्म। है ना? तो ये जो हाँ चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम करेंगी आपको। अगर आप चाहती हैं कि ये सारी चीज़ें, जैसे सपोज़ आप PhD करने के बाद कहीं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई करेंगी, राइट? ज़ूलॉजी से आपने MSc किया हुआ है, तो आप ज़ूलॉजी के लिए अप्लाई करोगे, या कहीं टीचिंग यस सर। करोगे, तो वहाँ इंटरव्यू में आपसे टीचिंग के रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जाएँगी, राइट? यस सर। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, कि आपको अपने दिमाग में कैसे सारी चीज़ें रिकलेक्ट करनी है और याद रहें, आपको या तो डेली बेसिस पे खुद स्टडी करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यस सर। ठीक है? क्योंकि सेल्फ के लिए आप इतना काम नहीं करने वाले हैं। नहीं सर। जब आप कहीं पे एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी आप ज्वाइन कर लेंगे, इधर और ऑनलाइन और ऑफलाइन, ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, कॉलेज, वॉट एवर, कुछ भी, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि देर आर सम स्टूडेंट्स एंड आई हैव टू टीच देम। तो डेफिनेटली हम्म। आपको उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, फिर आपकी बॉडी की एनर्जी भी मेंटेन हो जाएगी, फिर टाइम भी आपको निकल जाएगा, फिर आप पढ़ाई भी कर लेंगे। वो यस चीज़ सर। करके आप कर सकते हैं। और अगर आप अपनी PhD के सबमिशन के टाइम पे हैं, तो ऐसा काम करना आप थोड़ा शुरू कर दीजिए, ताकि वो आपकी रूटीन में बना रहे। अभी के लिए फिलहाल इसका बेटर फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपको इंटरव्यू देने जाना है। आते हैं आपके बाकी आंसर्स के रिप्लाई पे, और आपके इंट्रोडक्शन पे, और आंसर्स की जो लेंथ थी उस पे। कई सारे सवाल में मुझे ऐसा लगा, जैसे सिंपली मैंने ये सवाल पूछा था कि कैसे एंटीबॉडी इंटीजर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट आउट कर देता है, और उसका क्या मैकेनिज्म होता है। थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो आंसर आप दें, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट और रिलेवेंट हो, अननेसेसरी के चीज़ों को बताने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं ना है। हो कि मैं कोई एक सवाल पूछूं इम्यूनोलॉजी से, और आप उसमें पूरी इम्यूनोलॉजी को पूरा क्या करें, समराइज कर दें, कि सर T सेल्स भी होता है, सर B सेल्स भी होता है, सर ये B सेल्स होती है, सर ऐसे भी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ठीक है जो सर। आपका क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, उसको सेंट्रलाइज करके, कम से कम वर्ड में, जितना उस आंसर के लिए, उस क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट आंसर हो, उतना बोल करके अपना टाइम और अपनी एनर्जी को आप सेव कर सकते ठीक हैं, है सर। राइट? यस सर। तीसरा चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट इम्यूनोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में है, और ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ओके जैसा सर। मुझे लगा कि लगभग करीब 30 से 40 सवाल तो मैंने ही आपसे पूछ डाले होंगे, हाँ सर। है ना? और ऐसा नहीं था कि कोई एक टॉपिक से रहा होगा, बहुत सारे टॉपिक से सवाल आपसे पूछे गए, कुछ ऐसे आपके हाइपोथेटिकल विचार जानने के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस पे, कुछ मेमोरी बेसिस पे, कुछ फैक्ट बेसिस पे, सारे टाइप के सवाल मैंने आपसे पूछे। यस सर। जितने सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, उनमें से मैक्सिमम का आपने आंसर्स दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जिनमें आप थोड़ी सी फंसी, और आपने उसको डिनाई किया कि सर ये हमको नहीं आता है, हमने नहीं पढ़ा हुआ है। जैसे लाइक एज मैंने NMR के बारे में पूछा, तो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रही हैं, और आपका बायोकेमिस्ट्री फेवरेट है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो पोर्शन है, वो आपको तैयार होना चाहिए। आई डोंट नो ठीक कि है सर। आपने 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कैसे नहीं सुना। आप CSIR की JRF हैं, और JRF सुना में है, बट रिवाइज नहीं है। हाँ, ये मैं ये करती हूँ ये आंसर इलेक्ट्रोफोरेसिस सही हो डेली। सकता है। ये आंसर सही हो सकता है कि राइट नाउ सर आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट दिस डेटा। आई हैव स्टडीड एंड आई heard about it, but right now I am unable to recollect this. बट ये कहना कि सर मुझे आइडिया इसके बारे में नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। दैट इज यू हैव अ CSIR JRF, और CSIR JRF ऐसे सरफेस नॉलेज लेकर के नहीं निकलता है, राइट? तो तो 2 बार है जेआरएफ। 2D electrophoresis सर means that is combination जी। of electrophoresis and isoelectric focusing। यहाँ पे D का मतलब है डायमेंशन।
वन डी ओके सर। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है वहाँ पे सिर्फ हम वन डायमेंशन में काम करते हैं, हमारी एक एक्सिस होती है जिसपे प्रोटीन की बैंड आती है। बट अगर टू डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें टू डी इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो वहाँ पे एक जो सेपरेशन होता है वो आइसो इलेक्ट्रिक फोक्सिंग से बोलते हैं, मीन्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे, और दूसरा आपका होता है दैट इज द मॉलिक्यूलर के बेसिस पे। इस बेसिस टेक्निक की मॉलिक्यूल। जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज कोई प्रोटीन ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट सेम है लेकिन वो डिफरेंट है, अगर आपको उनको डिफरेंट। सेपरेट करना है, या दो कोई प्रोटीन ऐसे हैं जिनका आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट क्या है, डिफरेंट है, तो इन सिचुएशंस में आप टू डी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। तो ठीक है इलेक्ट्रोफोरेसिस सर। हुआ, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग हुआ, टू डी इलेक्ट्रोफोरेसिस हम्म। हुआ, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हुआ, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हुआ, राइट। ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये प्रोटीन के आइसोलेशन के लिए, प्रोटीन के सेपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हाँ आप सर। बायोकेमिस्ट्री को बोलती हैं कि आपका बायोकेमिस्ट्री फेवरेट है, तो टेक्निक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लाइक एस प्रोटीन आइसोलेशन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जैसे जैसे आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सीडी एंड ओआरडी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये सब बहुत यस। इंपॉर्टेंट है, और इन सब का आपको जो आइडिया है वो होना चाहिए। अगर आपको अभी नहीं है तो आपके फ्यूचर के लिए मैं सजेशन यही करूँगा कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं टीचिंग करने में और ख़ास करके बायोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए, तो ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं इनको आप ज़रूर से ज़रूर फोकस करें और इन पे अपनी थोड़ी पकड़ बनाएं। सर फिलहाल के लिए अगर उन्होंने पूछेंगे कि ठीक कौन सा टॉपिक मैं बोलूं, सर बायोकेमिस्ट्री मैंने बोला बिकॉज मैं बायोकेमिस्ट्री मेजर था मेरा। और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अभी जब मैंने इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ा, मुझे पूरा सब कुछ ही टफ लगता है, जेनेटिक्स थोड़ा ठीक लगता है, बट जेनेटिक्स तो सॉल्व नहीं कर सकते वहां पे, और मेमोराइज करने वाली चीजें मैं भूल रही हूँ, तो इसीलिए मैंने जेनेटिक्स बोला नहीं। मगर इम्यूनोलॉजी मैंने रिसेंटली इसी बार इसी एग्जाम के लिए पढ़ा, और मैंने बहुत कभी नहीं पढ़ा था इम्यूनोलॉजी, पर इस बार जब पढ़ा तो मुझे समझ आया, फर्स्ट टाइम समझ आया। और तो इसीलिए मैंने इम्यूनोलॉजी लिखा है इसमें, पर बायोकेमिस्ट्री इसलिए लिख दिया कि मेरा मेजर था, मुझे इसकी पहले से नॉलेज होगी इसलिए। बट अभी सब कुछ रिवाइज नहीं हुआ है, तो मैं सर एग्जाम में क्या बोलूँ इंटरव्यू में कि मैं, अगर उन्होंने पूछा बाई चांस, वैसे पूछ नहीं रहे हैं ज्यादातर लोगों से, अगर अगर उन्होंने पूछा तो इम्यूनोलॉजी बोल दूँ? आप दोनों बोल सकती हैं, बायोकेमिस्ट्री बोल सकती हैं, इम्यूनोलॉजी भी बोल सकती हैं, दोनों पे ही आपके मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट गायब है, कॉन्सेप्ट आपको है, ऐसा नहीं है, आप चीज़ें जानती हैं, लेकिन अगर सपोज जैसे मतलब मैं अगर इंटरव्यूअर हूँगा तो अगर आप ये बोलेंगे कि आपका बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली मैं थोड़े अच्छे चीज़ों का एक्सपेक्टेशन आपसे करूँगा कि आप वही सर। तो मैं ना तो बोलूँ बायोकेमिस्ट्री अभी नहीं नहीं, फिलहाल? बोलिए अभी बोलिए, मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बेसिक जो पकड़ है वो ठीक है, थोड़ा सा जैसे आपका इंटरव्यू कब है, परसों है? यस सर। नहीं सर, 11 को। 11 को आज है? 8। हाँ, अच्छा, 9, 3 दिन का 10, टाइम 11। है। तो एक जैसे दिन का अगर टाइम। आपको लगता है कि आप बायोकेमिस्ट्री में कंफर्टेबल हैं, आपका उस तो इस पे बेस है, तो थोड़ा बायोकेमिस्ट्री की कुछ जो बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उनको थोड़ा एक बार गो थ्रू हो लीजिए। कोई अगर ओके आपके सर। पास नोट्स है, कोई स्टडी मटेरियल है जहाँ से आपने यूज़ किया हुआ है, जो भी पढ़ाई किया हुआ है, उसको लेकर के एटलीस्ट बायोमोलिक्यूल्स वाला जो पोर्शन है वो स्टडी कर लीजिए, कुछ टेक्निक्स के बारे में आप जान लीजिए। टेक्निक्स पढ़ने पड़ेंगे, हाँ सर। ठीक है? तो इस पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा कि हाँ, चलो ठीक है, ये हम पूछ रहे हैं तो हमको ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहेंगे तो कर लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं है। बस थोड़ी-थोड़ी जो चीज़ें हैं उसको रिवीजन में हो जाए कि हाँ, क्रोमेटोग्राफी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें। तो एक बार आपको भी कॉन्फिडेंस देगा और सारी चीज़ें आप जान भी जाएँगे। ठीक है? यस सर। एंड ओके, और बाकी अगर आए आपके कम्युनिकेशंस पे तो वो ठीक है, उसमें कोई बहुत इशू नहीं है। बट थोड़ा-सा बस इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि हाँ, आप जब आंसर्स कर रही होती हैं तो बहुत लेंदी आंसर देती हैं। ओके सर, तो तो जिसको शॉर्ट में हाँ, उसको हो हो जाता सके तो फैक्ट बेसिस पे की पॉइंट्स को बोलिए जिससे आपका काम हो जाए। है। क्योंकि ठीक है लेंदी सर। आंसर बोलने में क्या होता है ना कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो अपनी इंटरेस्ट को डेवलप नहीं कर पाते। फिर वो वेट करते हैं कि अच्छा कब आप बोलना बंद करेंगे, फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछूँगा। राइट? तो ये चीज़ थोड़ा-सा आपको ध्यान में देना होगा। लेंथी आंसर्स नहीं देने हैं, छोटे और जिस्ट में आप बात हाँ, बतानी है। मतलब कि छोटे आंसर्स हो, फैक्ट बेसिस पे हो और उसमें तथ्य हो, घुमाने-फिराने वाली बात ना हो। अगर मैंने आपसे ठीक है। पूछा है कि हाँ, बी सेल्स का फंक्शंस क्या है, तो डायरेक्टली आप बी सेल्स के फंक्शन पे आइए।
ठीक है। राइट, कि हाँ सर व्हीसल्स का फंक्शन यही यही है, ऐसे ऐसे ये करता है, दैट्स इनफ। ओके, बाकी ड्रेस तो आप अरेंज कर लेंगी, अच्छे से आप पहन के ही जाएंगे, गर्मी का टाइम चल रहा है। और आई डोंट थिंक कि और किसी की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शंस का पोर्शन आपका हो गया, सब्जेक्ट का हो गया, कम्युनिकेशंस का हो गया, आंसर्स के लिए हो गया। बाकी हाँ, बाकी ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। इंट्रोडक्शन में बोला कि मैंने बीएससी एंड एमएससी जूलॉजी से की है। हाँ, सो क्या उनको पहले से पता होगा ये बात, या फिर मैं नहीं बताऊं तो भी चलेगा? मतलब मैं वैसे तो अगर ये वैसे तो वो बोलूं। फॉर्म लेकर के बैठे हुए होंगे आपका, क्योंकि उनको फॉर्म से बहुत सारे डेटा फीस करना होता है, उसी से रिगार्डिंग सवाल पूछते हैं। ठीक है, अगर आप जूलॉजी स्पेसिफाई ना करेंगे तो भी चलेगा। यू डिड आई डिड वही। माई बीएससी एंड एमएससी इन फला फला यूनिवर्सिटी इन फला फला ईयर। अगर वो पूछते हैं कि व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन, देन यू हैव टू आंसर दैट इज सर जूलॉजी। आई विल। इनिशियली आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, ठीक है, वही मैंने सोचा। या हाँ, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, चलिए थैंक यू ओके। सो मच। आई होपफुली कि अभी आप थोड़ा अच्छा फील कर रही होंगी, और आपको जो जो पे काम करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आप उन हाँ पे सर। थोड़ा-सा वर्क करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर आप स्टिल कोई चीज़ के लिए अगर आपको डाउट रहता है, तो नंबर आपके पास है। आप मैसेज करके अपने डाउट को पूछ सकती हैं, और अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बेस्ट ऑफ विशेस, और इंटरव्यू देकर के आइए तो ज़रूर बताइए कि इंटरव्यू कैसा रहा। ठीक है? यस सर। सर एक चीज और पूछनी थी, अगर पॉसिबल हो सकता है तो क्या मैं ये सारी चीजें पढ़ने के बाद 11 को मेरा इंटरव्यू है, सुबह 11 बजे, तो मैं रात 10 की रात को दोबारा से पेमेंट करके दोबारा से एक मॉक इंटरव्यू दे सकती हूँ? जी पेमेंट करके दोबारा नहीं, एक नहीं, इंटरव्यू, बात पेमेंट की मॉक नहीं है। इंटरव्यू। एक्चुअली 11 तारीख में लगभग 4 से 5 लोगों का स्लॉट है। सो वी विल सी, आई विल सी इफ देयर इज एनी स्लॉट अवेलेबल, देन डेफिनेटली आई विल अलाउ यू कि आप हाँ सर, दोबारा से। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे इम्प्रूवमेंट की, तो मैं ये 2-3 दिन डेफिनेटली में सब आप उस पे काम हाँ। कीजिए, जो जिन चीज़ों को सजेशंस मैंने आपको दिया है आप इन पे वर्क कीजिए। और 10 यस तारीख सर। को हो सकेगा तो फिर एक बार हम लोग इंटरेक्ट होंगे। थोड़े यस टाइम सर। के लिए होंगे, लेकिन होंगे। ठीक है, फिर आपका पता चल जाएगा कि हाँ क्या कंडीशंस है आपकी। यस सर। यस सर। चलिए थैंक यू ओके। सर, थैंक